Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we will today start with our science chapter number 3, that is human body. And in human body we have to learn the digestive as well as the excretory system. Students, in our previous class, that is in your smaller class, we have already learned about the different parts of body as well as the different organs and organ systems. Okay, so whenever many organs are working together, so these working together give you a specific function, and that thing is called as your system. So here in this chapter we will first learn about the digestive system, where we will know that which organs are taking part in our digestion procedure and what are their functions. Okay, after completion of our digestive system we will move to the excretory system. Now students, you know that in order to work our body needs some energy. हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है. तो दैट एनर्जी वी ऑलवेज गेट फ्रॉम आवर फूड, इजंट इट? सो जो भी एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए हम उसे हमारा फूड खाना से उसे पूरा करते हैं. हम यदि प्रॉपर फूड लेंगे तो हमारा बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करेगा. ओके, सो एज योर बॉडी वांट्स फूड टू work, so there is a system which are used for breaking down your food and converting this food into energy. So आपके बॉडी में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा जो भी फूड होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये एनर्जी से ही हमारा बॉडी वर्क करता है. So the digestive system is the system which breaks down the food whatever we have and convert it into energy that our body requires to do work. Okay, so we have to go for the different organs that are responsible for the digestion of food. Students, you can see the human body, and inside that you can see the different organs that are inside our body which helps for the digestion of food. So first of all, when we eat food through our mouth, हम जब food अपने mouth से लेते हैं तो mouth के अंदर along with saliva and your teeth, the food is broken down into small particles and then it is moved to your food pipe. Okay, so food pipe, it is moved towards your food pipe. Then from the food pipe the food reaches to your stomach. Can you see the stomach over here? Okay, then from stomach the food gets churned and again broken down into a much smaller particles, and then it is moved towards your intestine. That is, first it is moved towards your small intestine where the useful juices are absorbed and the waste products are moved towards your large intestine. तो पहले माउथ से फूड पाइप की ओर हमारा फूड जाता है, उसके बाद वो हमारे स्टमक में एंटर करता है और स्टमक में जो भी फूड पार्टिकल्स होता है उसको और भी स्मॉल पीसेस में
स्टमक के अंदर एसिड उसको और भी स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद वो ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ फूड एंटर किधर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद जो भी यूज़फुल थिंग्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उनको वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी यूजफुल थिंग्स रहते हैं दैट आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड वॉट एवर रिमेनिंग थिंग्स आर देयर दे आर pushed to the large intestine. So from large intestine the products, the waste products, whatever water and other useful things are again absorbed. तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर और जो भी यूज़फुल जूसेस है वो उनको वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी नॉट रिक्वायर्ड यूजलेस थिंग्स, that is waste products are there, they are pushed to the rectum and anus of our body. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एनस और रेक्टम में पुश कर देता है, एंड फ्रॉम एनस एंड रेक्टम द वेस्ट प्रोडक्ट is thrown out of the body in the form of stool and urine. सो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे रेक्टम और एनस से बॉडी के बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ योर स्टूल एंड यूरिन. सो स्टूल एंड यूरिन आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर body that are not absorbed by your body. Okay, so these are the waste products which are the food materials that are not absorbed by your body. Okay, so these are the different organs that are used during your digestion procedure. digestion procedure में आपको mouth, food pipe, आपका stomach, small intestine, large intestine, these are the organs which come into play. Okay, so we will just see different types of organs and what type of help they are giving for the digestion procedure. ओके, सो हम लोग एक एक ऑर्गन हम लोग स्टडी करेंगे और मालूम करेंगे कि जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहे हैं वो किस किस तरह से बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है. Now students, you can go through the organs that help in digestion of food. They are the mouth, food pipe, stomach, liver, small intestine, large intestine, rectum and anus. Okay, so there are 8 organs that are helping our body for the digestion procedure. Now we will go for one by one digestive organs, and we will see which organ helps in which way for the digestion procedure. Now we will first see the first organ of digestion, that is your mouth. So what happens inside mouth? Food is taken through mouth. So you take your food, then digestion begins in the mouth. So digestion procedure starts in the mouth itself. Then teeth helps to bite and chew food. So in the mouth, inside mouth, you have teeth, so that helps to bite and chew the food. Then whatever food is chewed and bitten, that food is mixed with the saliva. Saliva means जो हमारे माउथ के अंदर जो थूक होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं. तो वो सलाइवा के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है. सो फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा विच मेक्स द फूड सॉफ्ट. तो एज द फूड इज chewed along with saliva, the food particles become soft, and the tongue, which is again inside your mouth, helps to mix the food with saliva
So as the tongue is there, it helps in mixing food with saliva. Then as the food is mixed along with saliva, the food is swallowed and then it moves down to the food pipe. So in the mouth this all process takes place. माउथ के अंदर ये पूरे एक्टिविटीज स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम फूड लेते हैं माउथ के थ्रू, फिर वहाँ पे टीथ उसको च्यू करता है, बाइट करता है, सलाइवा जो फूड है उसको सॉफ्ट करता है, टंग हेल्प्स टू मिक्स अप दिस सलाइवा एंड फूड एंड देन इट इज pushed to your food pipe. So the first organ of the digestive system works like this. ठीक है, so first organ mouth का वर्क जो है वो इतने सारे हैं, that is 6 works are done in mouth. Okay, so mouth is one first important organ of a digestive system. Now your second digestive organ is food pipe, which is also called as esophagus. So second organ, that is food pipe, helps to carry food and liquids from mouth to stomach. So whatever food and liquids are in mouth, they are pushed down to stomach with the help of your food pipe, which is also known as esophagus. Now you can see the third organ of your digestion system, that is your stomach. So you can see the stomach, it is a J-shaped bag-like organ. Can you see the J-shaped? Okay, so it is a J-shaped soft bag-like organ. It is very soft, and inside this stomach you have digestive juices which helps the food to break down into further more smaller particles. Okay, so see the structure of stomach. So you can see the description where you have the J-shaped bag like organ. It contains digestive juices that breaks the food into further smaller particles. Here the food changes into pulp-like thick paste. Okay, so food particles become smaller and smaller and they are changed into pulp-like thick paste called chyme. And this semi-digested food or chyme is further moved into the small intestine. So in the stomach, जब food particle stomach के अंदर आता है तो digestive juices inside the stomach helps the food particles to break further into more smaller particles और छोटे छोटे टुकड़ों में food को break down कर देते हैं और वो food एक पल्प लाइक थिक पेस्ट की तरह हो जाता है और वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्टमक से फिर मूव करना पड़ता है और दैट विल मूव टू योर नेक्स्ट digestive organ, that is your small intestine. Now as the food is moving to the small intestine, where the small intestine needs many juices which are obtained from the liver, the gallbladder and the pancreas. Small intestine में जब food जाता है उस समय फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जूसेस लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से मिलता है. सो लीवर क्या करता है? दे प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस. गॉल ब्लैडर स्टोर्स द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड रिलीजेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन रिक्वायर्ड, एंड पैनक्रियास produces chemicals or enzymes which are released into the small intestine. So these three are
the organs which helps the food to digest. Okay, तो ये जो 3 organs है ये भी हमारे digestion procedure में काम करते हैं. तो ये जो 3 organs है, ये organs, एक जो liver है वो हमें digestive juice देता है. Gall bladder, whenever digestive juice is required, that time they release the digestive juice. And then pancreas also releases some chemicals in the small intestine. Okay, so whatever juices and the chemicals that are released by these organs are poured in the small intestine. इसमें से जो भी है सब small intestine में जाके पोर होता है और then small intestine starts working. Okay, so this is the organ which is the main organ, and this remaining are the organs which are also helpful. ठीक है. सो जो फूड है वो इन ऑर्गन्स में नहीं जाता है. इन ऑर्गन में से जो भी चीज़ें निकलती है फूड उससे मिक्स हो जाता है. ठीक है. सो दिस आर द ऑर्गन्स विच ऑल्सो कम इन टू वर्क ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड. इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्किंग देखेंगे. Now, if you move to small intestine, these are long coiled tube which helps in further breakdown of food by mixing with digestive juices and enzyme from liver and pancreas. Then nutrients are absorbed from food. Nutrients go into the blood. Blood takes nutrients to various parts of the body, and undigested food is pushed into large intestine. So small intestine में क्या होता है, वो लॉन्ग कॉइल्ड एक ट्यूब है. उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस और जो एंजाइम्स है वो लीवर और पैनक्रियास से जो हमें मिलता है वो क्या करता है, जो पार्टिकल्स है स्टमक से आए हुए पार्टिकल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करता है और देन दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इनटू. और जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्सॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में उसको न्यूट्रिएंट्स को डाल देता है. ठीक है. और ब्लड क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेकर चला जाता है. और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो is pushed into your large intestine. Okay, so small intestine में juices and enzymes help to break the food further into small particles, and then nutrients are absorbed by the small intestine, and these nutrients are taken up by the blood, and blood takes the nutrients to different parts of the body. Okay, and the undigested food is pushed into the large intestine. So we will see the picture of small intestine. So if you can see the picture of small intestine, it is the coiled structure. ये जो अंदर जो है ना coiled structure, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो ब्राउन दिख रहा है ये आपका लीवर है जिसमें से जूस निकलता है. ठीक है. सो ये स्टमक है, देखिए. सो यहाँ पे लीवर है जो कि आपको जूस वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करता है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में whatever nutrients are there, they are absorbed. Okay, and the unused undigested food is taken into your large intestine. So ये जो boundary आप देख रहे हैं ये है thick one, that is your large intestine. Now as the food is moved to the large intestine. The large intestine is a long tube and it is collecting the undigested food, and where the water, extra water, whatever is there in the undigested food is absorbed inside the large intestine and they form the waste products. Okay, and then this waste product is moved to the rectum, which is also a tube connected to large intestine, and after moving towards to the rectum, the waste products are
forming the feces, and these feces are excreted out after some time. Feces means the stool. Okay, and next is the anus. The anus is the organ which are useful for excreting out the feces. Okay, so you have gone across all the organs which are useful for your digestion procedure and what are the work they are doing. So in our next video we will just see how we can go for the importance of chewing food properly and need for regular bowel movements, as well as we will go for the excretory system. Thank you.